हे हे हेलो व्हाट्सअप। हम बात करेंगे आज को नेशनलिज्म के बारे में बाय रविंद्रनाथ टैगोर, या दिस बुक। तो हम इस बुक के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। एक सेकेंड, ये खोल देते हैं। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। मेरा बॉटल गिर गया। इज इट फाइन? इट्स जस्ट दैट इधर से लाइट आ रहा है ना, मेरा बुक में थोड़ा सा शैडो 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 हो जा रहा है, और मेरा फेस पे भी परछाई आ रहा है ना। चलो, सो या पिछले हम एक स्ट्रीम पे वी टॉक्ड अबाउट दिस बुक। वी रेड द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। किसका? ओ सॉरी, we read the first introduction part of Rabindranath Tagore. Who was Rabindranath Tagore? I mean, there is not a single soul in here जो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में नहीं जानते हैं या रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में नहीं जानते। He was a Bengali poet, a Nobel laureate, and who reshaped the Bengali culture hugely through his art, music, plays, etc. तो हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे, एंड इंट्रोडक्शन हम आज को फिर से पढ़ेंगे, पर उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे। आई डायरेक्टली विल जंप इनटू द नेशनलिज्म इन जापान वाला पार्ट से। वो वाला पार्ट हम अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स गो। A Bengali polymath who reshaped Bengali literature, music, and Indian art with contextual modernism in late 19th and early 20th centuries. Rabindranath Tagore became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. Born in Calcutta in 1861 to parents Devendranath Tagore and Sarada Devi, he was raised mostly by servants. The Tagore family was at the forefront of the Bengali Renaissance. They were regular hosts of the publications of literary magazines, theatres, and recitals of Bengali and Western classical music. Tagore avoided classroom schooling and loathed formal education. His brother tutored him physically and mentally. He learned drawing, anatomy, geography, history, literature, mathematics, Sanskrit, and English. His least favorite subject. Okay, so basically, English was his least favorite subject. He learned drawing, anatomy, geography, history, mathematics, Sanskrit, and English his least favorite subject. His scholarly travels His scholarly travels at the local Presidency College spanned a single day. Years later, he held that proper teaching doesn't explain things but strokes curiosity. Years later, he held that proper teaching doesn't explain things but strokes curiosity. Tagore's father wanted him to become a barrister, so he enrolled at a public school in
Bridgeton, East Sussex, England in 1878, but returned to Bengal degreeless in 1880s, resolving to reconcile European novelty with Brahmo traditions. He married Mrinalini Devi in 1883, with whom he had five children, two of whom died in childhood. Tagore's sadhana period, 1891 to 1895, named after one of his magazines, was his most productive. He wrote more than half the stories of three volumes, 84 stories, called Golpugucho, in these years. Its ironic and grave tales examine the voluptuous poverty of an idealized rural Bengal. He moved to Santiniketan in 1901 to found an ashram with a temple with a marble floor prayer hall, the mandir, an experimental school, groves of trees, gardens, a library, etc. तो फिर से पढ़ते हैं. He moved to Santiniketan in 1901 to found an ashram with a marble floored prayer hall, the mandir, an experimental school, groves of trees, gardens, a library, etc. He lost his wife and two children there. In 1905, his father also died. Tagore published Naivedya in 1901 and Khea in 1906 and translated poems into free verse. He gained Bengali and foreign readers alike. Gitanjali, the original Bengali collection of 157 poems, was published in August 1910. The English Gitanjali, or Song Offerings, a collection of 103 poems which he himself translated from Bengali, was published by Indian Society of London in November 1912. It contained translations of 53 poems from the original Bengali Gitanjali, as well as 50 other poems which were from his drama Achetyam and 8 other books of poetry. Tagore won the Nobel Prize in Literature in November 1913. The British Crown granted Tagore a knighthood in 1915, which he rejected in 1923, I think. Rejected वाला part नहीं लिखा हुआ है, but I'm just saying so that you know. Uh, एक second. Okay, sorry. Rabindranath Tagore renounced his knighthood in 1919 to protest the Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre. So basically, he got the knighthood in 1915 and rejected it in 1919. I'm bad in remembering dates nowadays. Tagore set foot in more than 30 countries on 5 continents between 1878 and 1932. He took a sheaf of his translated work to England in 1912, where they gained attention from missionary and Gandhi protege Charles F. Andrews, Irish poet William Butler Yeats, Ezra Pound, Robert Bridges, Ernest Rice, Thomas Sturge Moore and others. So ये सारे poets से उनको जान पहचान हुआ, and like basically they came to know about this person, came to know about Rabindranath Tagore, and he also came to know about them. Basically दोनों का जान पहचान हुआ through Rabindranath's work. In the same year, Yeats, matlab William Butler Yeats, wrote the preface to the English translation of Gitanjali, and Andrew joined Tagore at Santiniketan, or Santiniketan, whatever you want to call it. He lectured in Japan and the United States from 1916 to April 1917. He lectured in Japan and the United States from May 1916 to April 1917 and denounced nationalism. His essay Nationalism in India was scorned and praised. मतलब कोई उसको पसंद किया and कोई उसको like पसंद नहीं किया basically.
Tagore is mostly for his poetry, though he wrote novels, essays, short stories, travelogues, dramas, and thousands of songs. His works are noted for their rhythmic, optimistic lyrical nature. Tagore wrote autobiographies and non-fiction grappled with history, linguistics, and spirituality. His travelogues, essays, and lectures were compiled into several volumes. Harvard Unite, sorry, Harvard University Harvard University Press collaborated with Biswa-Bharati University to publish the Essential Tagore, the largest anthology of Tagore's work available in English in 2011. Sorry, ये लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं because of the million mistakes that I did. Harvard University Press collaborated with Biswa-Bharati University to publish the Essential Tagore, the largest anthology of Tagore's work available in English in 2011. It marks the 150th anniversary of Tagore's birth. A prolific composer of music, Tagore had 2,230 songs to his credit, known as Rabindranath bracket Tagore's song. They merge fluidly into his literature, most of which poems or parts of novels, stories, or plays alike were lyricized. He wrote 8 novels and 4 novellas. Novellas are basically short novels, matlab they are longer than stories but shorter than novels. Tagore opposed imperialism and supported Indian nationalists, uh, and these views were first revealed in Manasat, which mostly composed in his 20s. He criticized the Swadeshi movement and rebuked it in his 1925 essay The Cult of Chakra. Matlab he didn't like the Swadeshi movement and he rebuked it in 1925 essay called The Cult of Chakra. He saw the presence of British administration as a political symptom of our social disease and urged the masses to avoid victimology and instead seek self-help and education. The last 5 years of Tagore's life were marked by chronic pain and too long period of illness. In late 1937, he had lost consciousness and remained comatose and near death for a time. This was followed by a similar spell in late 1940s and he never recovered again. Tagore died in 7th August 1941, aged 80, in the upstairs of his जोरासको मैंसन where he was raised. जोरासको का जिस मैंसन पे टेगर रेज हुआ था उसी सॉरी वही मैंसन का ऊपर का घर में उनका डेथ होता है 7th अगस्त 1941 को एट ए एज ऑफ 80 years old. सो इसके बाद शुरू होती है नेशनलिज्म इन जापान. ये वाला हम एक एक लाइन अच्छा से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे. सो लेट्स गो. ओके गिव मी लाइक सम टाइम. हम अपने स्प्राइट को लेके आते हैं. ठीक है. एक सेकेंड. Nationalism in Japan. Nationalism in Japan.
The worst form of bondage is the bondage of dejection, which keeps men hopelessly chained in loss of faith in themselves. क्या बोल रहे हैं? The worst form of bondage is the bondage of dejection, which keeps men hopelessly chained in loss of faith in themselves. वर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉन्डेज है जब लोग अपने आप पे लाइक विश्वास खो देते हैं, एंड वही जो अपने आप पे जो लॉस ऑफ फेथ है वही उसको लाइक आगे बढ़ने के लिए लाइक रोकता है. We have been repeatedly told with some justification that Asia lives in the past. It is like it is like a rich mausoleum which displays all its magnificence in trying to immortalize the dead. तो ये बोला जाता था कि एशिया अपने पास्ट पे जीना पसंद करते हैं. एशिया एक रिच म्यूजियम टाइप का है जहाँ पर बहुत पुराने पुराने सामान रखे हुए हैं, पुराने पुराने हिस्ट्री रखे हुए हैं, एंड जो डेड हो चुके हैं उसको इमोर्टलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं. एशिया इज़ दैट टाइप ऑफ प्लेस जो अपने पास्ट को जिंदा करके अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं. बेसिकली दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. It was said of Asia that it could never move in a path of progress. Its face was so inevitably turned backwards. We accepted this accusation and came to believe it. तो क्या बोल रहे हैं? एशिया का ऐसे एक छवि हो गया था कि वो अपने पास्ट की तरफ ही घूम के रहेगा, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये कभी ग्रो नहीं करेगा. एंड रविंद्रनाथ इज सेइंग दैट कि हम लोग ये एक्यूजेशन को ऑन द फेस वैल्यू ले लिए थे. In India, I know a large section of our educated community grown tired of feeling the humiliation of the charge against us. It's trying all its resources of self-deception to turn it into a matter of boasting. तो क्या बोल रहे हैं? तो इंडिया का जो एजुकेटेड क्लास है, टू बी ऑनेस्ट अभी भी आप देख सकते हो, देर आर स्टूपिड थिंग्स दैट वी हैड इन आवर पास्ट. आई मीन उस टाइम पे हम लोग का उतना ज़्यादा एक्सपोजर टू साइंस नहीं था, उस टाइम पे हम लोग का उतना ज़्यादा एक्सपोजर टू क्वेश्चनिंग रैशनलिज्म नहीं था, इसीलिए हम लोग कुछ प्रथा चलाते आ रहे हैं. एंड देर आर पीपल the guy whom Pranav Radhakrishnan calls the science minister, सुधांशु तिवारी, एंड ऐसे काफ़ी से ज़्यादा लोग हैं जो रैशनलाइज करने का कोशिश करते हैं थ्रू साइंस की वेल हम लोग का रिलीजन में ये था एंड वी आर द फर्स्ट पर्सन हु डिड इट, और वी आर द फर्स्ट एथनिक ग्रुप हु डिड इट. There are people who even now try to do it, but again we are talking about Rabindranath's time. It is mid British time, by the way. So yeah, let's continue. तो क्या बोल रहे हैं? जो एजुकेटेड कम्युनिटी है वो ये जो एक्यूजेशन है कि एशिया का कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इस पास्ट हेरिटेज, उसी के साइड पे वो देखते रहेगा. इस एक्यूजेशन को बीट करने के लिए कुछ तो करता नहीं है, पर इसके बावजूद does the contrary that they starts boasting about their heritage in the past. But boasting is only a masked shame. It doesn't truly believe in itself. तो यहाँ बोल रहे हैं ये लोग जो बोस्ट कर रहे हैं, ये लोग जो प्राइड दिखा रहे हैं, ये एक मास्क किया हुआ, एक छुपाया हुआ शर्म है. वो लोग शर्मिंदा है अपने आप का कंडीशन पे, एंड ये एक मास्क है जो बोस्टिंग है, ये एक दिखावा है. दे डोंट बिलीव इन इटसेल्फ. When things stood still like this, and we in Asia hypnotized ourselves into the belief that it could never by any possibility be otherwise, Japan
rose from our dreams and in giant strides left centuries of inaction behind, overtaking the present time in its foremost achievement. क्या बोल रहे हैं? When things stood still like this, we in Asia hypnotized ourselves into the belief that it could never by any possibility be otherwise. तो बोल रहे हैं कि जब हम लोग जो एशिया के लोग हैं, जब अपने आप को विश्वास करा लिए थे कि इससे अलावा कुछ हो नहीं सकते, हम लोग को अपने पुराने जो भी अचीवमेंट्स है उसी को बोस्ट करके रहना पड़ेगा, उसी को देख के हम लोग को जीना पड़ेगा। जब हम लोग अपने आप को बिलीव ये करा लिए थे एंड हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे जापान या सॉरी और कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं है हम लोग देखना ही बंद कर दिए थे। व्हाट हैपेंड? जापान रोज फ्रॉम अ ड्रीम्स एंड इन जायंट स्ट्राइड्स लेव द सेंचुरीज ऑफ इनएक्शन बिहाइंड। तो जापान अपने जो ये स्थिर हालात से उठ के, अपने जो ड्रीम्स है, अपने जो लाइक सोया हुआ हालात से उठ के जायंट स्ट्राइड्स मतलब बड़े बड़े कदम से आगे बढ़ गया एंड सेंचुरीज लाइक शतकों से जो कोई काम नहीं हुआ है, कोई अचीवमेंट नहीं हुआ है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया जापान एंड अपने फॉरमोस्ट अचीवमेंट को लाइक गेन किया। This has broken the spell under which we lay in torpor for ages, taking it to be the normal condition for certain races living in certain geographical limits. We forgot that in Asia great kingdoms were founded. Philosophy, science, arts, and literature flourished, and all the great religions of the world had their cradles. तो क्या बोल रहे हैं? This has broken the spell under which we lay in torpor for ages, taking to be the normal condition for certain races living in certain geographical limits. तो बोल रहे हैं कि एशिया के लोग मान लिए थे कि हम लोग और कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं और कुछ इस सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज में जो लोग जन्मे हैं, जो सर्टेन रेसेस का है, उन लोग का यही लिमिट है, वो इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये जो स्पेल के अंदर हम लोग इतना साल तक थे, जापान जब आगे बढ़ गया तो जापान दिखा के गया कि नहीं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वी कैन लीव आवर लाइक ईयर्स ऑफ इनएक्शन बिहाइंड एंड हम लोग आगे लाइक अचीव और नया नया लाइक डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम लोग साइंटिफिक अचीवमेंट कर सकते हैं, हम लोग रिसर्च में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट। तो उसके बाद ही इज सेइंग वी फॉरगॉट दैट इन एशिया ग्रेट किंगडम्स वर फाउंडेड, philosophies, science, arts and literature flourished, and all the great religions of the world had their cradles। मतलब सारे बड़े रिलीजन का बिगिनिंग एशिया में हुआ था, सारे काफ़ी सारे किंगडम्स इधर बने थे, काफ़ी सारे फिलोसफी, साइंस, आर्ट्स इधर फाउंड हुआ था, काफ़ी लिटरेचर इधर बनाया गया था एंड इसके बावजूद भी ये सब भूल के हम लोग एक स्थिर हालात पे क्यों रह रहे हैं? Therefore, it cannot be said. Sorry. Therefore, it cannot be said that there is anything inherent in the soil and the climate of Asia to produce mental inactivity and to atrophy the faculty which impel men to go forward. तो क्या बोल रहे हैं? Therefore, it cannot be said that there is anything inherent to the soil and the climate of Asia to produce mental inactivity and to atrophy the faculties which impel men to go forward. तो मतलब भाई
तो क्या बोल रहे हैं, देर इज नथिंग लाइक एसेंशियल टू द सॉइल ऑफ एशिया और द वेदर ऑफ एशिया और द नेचर ऑफ एशिया, जो कि भाई क्या हो रहा है। सो ही सेइंग कि ऐसे कोई एसेंशियल चीज़ नहीं है एशिया के अंदर जो कि मेंटल इनएक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, मतलब आलसी बना प्रोड्यूस करता है, ऐसे कुछ एसेंशियल चीज़ नहीं है, ऐसे कुछ नेचर बाय नेचर या बाय सॉइल या बाय ऐसे कुछ नहीं है जो कि साइंटिफिकली लाइक लोग को रिटार्डेड कर दे रहे हैं कुछ अचीव करने से, ठीक है। For centuries, we did hold the torches of civilization in the East when the West slumbered in darkness, and that could never be the sign of sluggish mind or narrowness of vision. तो बोल रहे हैं कि सेंचुरीज के लिए, शतकों के लिए हम लोग, मतलब एशिया यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लोग टॉर्चेस ऑफ द सिविलाइजेशन होल्ड किए हैं, लाइक सबको आगे हम लोग मार्गदर्शन किए हैं, हम लोग इतना अचीव किए हैं। ये इस चीज़ का तो सबूत नहीं हो सकता है कि हम लोग का स्लगिश माइंड है, हम लोग का नैरो विजन है, ऐसे तो नहीं हो सकता। पर ऐसे क्यों हो रहा है कि हम लोग इतना ज़्यादा आलसी हो जा रहे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा लाइक नैरो माइंडेड हो जा रहे हैं, हम लोग कुछ नया अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? Then fell the darkness of night upon all the lands of the east. Current of the current of time seemed to stop at once, and Asia ceased to take any new food, feeding upon its own past, which is really feeding upon itself. मतलब बोल रहे हैं कि एशिया कोई नया खाना लेना बंद कर दिया, अपने जो पुराने खाना है, खाना इज अ मेटाफर है, अपने जो पुराने अचीवमेंट्स है उसी के ऊपर फीड करते हुए जीना शुरू किया। एंड इफ यू टेक the metaphor of a man, a retired man, so to say, तो आप अगर रिटायर करके अपने जमा पूंजी के ऊपर खा रहे हो या अपने नेक्स्ट जनरेशन को खिला रहे हो, एक दिन तक वो चलेगा, बट लाइक एक दिन के बाद आपका जो भी स्पेंडिंग है उसको घटाना पड़ेगा, आपका जो लाइक डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको घटाना पड़ेगा। And that's the metaphor he's using for like the countries here. Okay, he's saying कि एशिया जो है, क्या हो रहा है भाई? So he's basically saying जो एशियाटिक कंट्रीज जो है वो अपने पास्ट के ऊपर फीड कर रहे हैं, वो अपने पुरातन स्टोरीज को बोल के लाइक अपने आप को खुश कर रहे हैं, अपने आप को ये दिलासा दे रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ किए हैं, उसको बोस्टिंग कर रहे हैं, बट अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। The stillness seemed like death, and the great voice was silenced, which sent forth messages of eternal truth that have saved man's life from pollution for generations, like the ocean of air that keeps the earth sweet and cleansing its impurities. क्या बोल रहे हैं? The stillness seemed like death, जो चुप्पी हो गया था, जो शांत भाव आ गया था, वो मृत्यु जैसे लग रही थी। And the great voice was silenced, which sent forth messages of eternal truth that have saved man's life from pollutions for generations. Like the ocean of air that keeps earth from its that keeps the earth sweet, ever cleansing its impurities. But life has its sleep, its period of inactivity when it loses its movement,
takes no new food, lives upon its past storage. It grows helpless, its muscle relaxed, and it easily lends itself to be jeered at for its torpor. क्या बोल रहे हैं? बोले लाइफ का कुछ पीरियड होते हैं जब हम लोग सो जाते हैं, जब हम लोग का पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी होते हैं, जब कोई मूवमेंट नहीं रहता है, हम लोग एकदम स्थिर हो जाते हैं, हम लोग कोई नया खाना नहीं लेते, कोई नया रिसोर्सेस नहीं लेते, हम लोग का जो पुराने स्टोरेज रिसोर्सेस है, जो पास स्टोरेज है, उसी के ऊपर हम लोग फीड करते हैं. देन इट ग्रोज हेल्पलेस, इट्स मसल रिलैक्स्ड एंड इट इजीली लेंस itself to be jeered at for stupor. ही इज यूजिंग द मेटाफर ऑफ अ मैन अगेन, जो कि लाइक एकदम रिटायर करके एकदम सो गए हैं. एंड इफ यू लाइक रिटायर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपका मसल रिलैक्स हो जाता है. आप अगर फिजिकली भी रिटायर हो जाते हो, आप घूम फिर नहीं रहे हो, आपका खड़े होने का भी क्षमता चल जाती है. दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. It grows helpless, its muscle relax, and then it can easily lend itself to be cheered at for its torpor. In the rhythm of life, pauses there must be for the renewal of life. तो बोल रहे हैं कि लाइफ का जो रिदम है उसके अंदर कभी कभी पॉजेस होना ज़रूरी है लाइफ को रिन्यू करने के लिए. लाइफ इन इट्स एक्टिविटी इज एवर स्पेंडिंग इट्स सेल्फ बर्निंग ऑन इट्स फ्यूल. दिस एक्स्ट्रावेगेंस कैनॉट गो on indefinitely, but it always followed by a passive stage which all expenditure is stopped and all adventures abandoned in favor of the rest and slow recuperations. तो अगेन ही सेइंग दैट जब हम लोग अपने जमा पूंजी पे खा रहे हैं, तब हम लोग को उतना एक्स्ट्रावेगेंस हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम लोग उतना एडवेंचर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. हम लोग को सारे एक्सपेंडिचर को कट डाउन करके, सारे एडवेंचर को कट डाउन करके एक स्लो एंड स्टेडी पेस पे हम लोग का लाइफ जीना पड़ेगा. एंड इस पैसिव स्टेज आना ज़रूरी है एक न्यू स्टार्ट होने के लिए. The tendency of mind is economical. It loves to form habits and move on in groups, which save it the trouble of thinking anew at each of its step. मतलब हम लोग का दिमाग जो है वो थोड़ा सा लाइक ऑटोमेटिक मोड पे चलना पसंद करता है. वी डोंट वांट टू मेक अ न्यू डिसीजन एट एवरी स्टेप. हम लोग को एक गिवन फार्मूला पे हम लोग लाइफ चलना थोड़ा सा पसंद करते हैं, इसीलिए लोग रिलीजियन पे इतना ज़्यादा मानते हैं. इनफैक्ट देर आर पीपल आई हैव सीन इन मैनी चैट रूम्स, दे आर लाइक अगर हम लोग एथियस्ट हो जाएंगे तो हम लोग को लाइफ कैसे जीना है. And this is the thing, like they don't want to take each decision of their life on as their own. They don't want to uh, तोल भाव नहीं करने चाहते कि कौन सा डिसीजन ज़्यादा ख़राब है या कौन सा डिसीजन कम ख़राब है और वट एवर, राइट. लाइक दे want a formula given by a book written like thousands of years ago, and that's what is being said here. The tendency of mind is economical. It loves to form habits and move on in groups, which save it the trouble of thinking anew at each of its step. सो हर स्टेप पे हम लोग को सोचना ना पड़े, इसीलिए माइंड एक तैयार करके रखता है कि इस फॉर्मूला पे हम लोग अपने आप का लाइफ जिएंगे. आइडियल्स वंस फॉर्म मेक द माइंड लेजी. अगर ऐसे फार्मूलाज या आइडियल्स फॉर्म कर लेते हैं, वही अपना आपका माइंड को लेजी बना देते हैं. लाइक कोई काम लाइक हर स्टेप पे काम करने के लिए लाइक उतना मन नहीं करते हम लोग का. It becomes afraid to risk its accusation in fresh endeavors. तो क्या बोल रहे हैं? It becomes afraid to risk its accusations in its fresh endeavors. मतलब जो पास्ट को बचाने के लिए फ्यूचर में कोई नया endeavors लेने में ये डरता है.
It tries to enjoy complete security by shutting up its belongings behind fortification of habits. अपने हैबिट्स बना लेता है एंड जो भी फ्रेश एडवेंचर्स है, इंडेवर्स है, उसको वो फोर्टिफिकेशन के बाहर धकेल देते हैं अपने हैबिट्स का। हम लोग सुबह में नींद से उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बॉस का दो गाली सुनते हैं, फिर से घर आते हैं 5 बजे, फिर से दोपहर के खाना खाते हैं या ऑफिस में खा लेते हैं, whatever. लाइक वी लीव ऑन अ पर्टिकुलर डे टू डे रूटीन, एंड ये रूटीन या हैबिट जो है हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। तो नया एडवेंचर्स हम लोग को जो मन में, हम लोग का जो करने का मन है वो कभी कर ही नहीं पाते हैं। हम लोग का जो एक जगह घूमने का मन है, जो एक चीज़ खाने का मन है, वो कभी कर नहीं पाते हैं। एक रेस्टोरेंट पे जो मम्मी पापा को लेके जाने का बात होती है, या एक जगह घूमने का मन होता है, ये हम लोग अचीव नहीं कर पाते बिकॉज of adhering to our habits. Again, I'm talking about like in context of a person, but in the same place, he is Rabindranath Tagore is talking about a country and its people here. But this is really shutting oneself up from the fullest enjoyment of one's own possessions, is miserliness. So क्या बोल रहे हैं, ये फ्रीडम नहीं है, ये अपने आप को सारे साइड से अगर शट डाउन कर देते हैं तो हम लोग अपने आप का जो फुलेस्ट पोजेशंस है, अपने लाइफ का जो फुलेस्ट लिमिट्स है, वो कभी टच ही नहीं कर पाएंगे, वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। वो फीलिंग जो लेट्स से एक ट्रैकिंग में जो फीलिंग आती है, जो हाइकिंग में जो फीलिंग आती है, या जो बंजी जंपिंग में जो फीलिंग आती है, अगर हम लोग को वो करने का मन है एंड हम लोग अपने आप को हैबिट्स का जो चार दीवारी में अगर बांध लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस हम लोग कभी कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग अपने आप का लाइफ कभी जी ही नहीं पाएंगे। अगेन आई नो दैट लाइक कैपिटलिस्ट दुनिया में हम लोग रहता हूँ, राइट। हम लोग को जाना ज़रूरी है ऑफिस टू लाइक अफोर्ड द रेंट, टू अफोर्ड food on the plate, and I know that, but like I'm trying to explain what he is saying here. And also like if you're talking about life advices, I'm not the best person to give life advices, but like there, you are the best person to judge your own life. There will be or there might be, if there is not, I will say that I don't know, but अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिल रहा है, you should try to feel best about yourself. Life is about living. Life is not about, you know, fuck. लाइफ एडवाइस नहीं देते हैं, कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे टाइप के लाइफ जीना मिजरलीनेस है। The living ideals must not lose their touch with the growing and changing life. The real freedom is not within the boundaries of security, but in the high road of adventures full of risk of new experiences. तो क्या बोल रहे हैं, ये रियल फ्रीडम नहीं है जो कि चार दिवाली मतलब सिक्योरिटी के चार दिवाली के अंदर रहता है, पर जो एडवेंचर का हाई रोड है वहाँ पर हम लोग को फुल फ्रीडम मिलता है, जो हम लोग को रिस्क में लाता है काफ़ी सारा न्यू एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर्स, एंडेवर्स करने को। many experiences that we might like and many experiences that we might not. So again he is going back from this individualistic personal approach to again Japan's talk here. One morning the whole world looked up and surprised when Japan. One morning the whole world looked up in surprise when Japan broke through her walls of old habits in a night and came out triumphant. It was done in such an incredibly short time that it seemed like a change of dress, not like building up of a new structure. बोल रहे कि एक सुबह पूरे पृथ्वी जाग के देखा कि जापान अपने आपका जो
पुराने दिवाली में वो बंद था उसको तोड़ के बढ़ चुका है। एंड ये एक कपड़ा चेंज करने जैसे लगा, नॉट अ बिल्डिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। ये इतना जल्दी हुआ किसी को समझ में भी नहीं आया, सॉरी, किसी को समझ में भी नहीं आया कि ये हुआ कब। She showed the confident strength of maturity and freshness and infinite potentiality of new life at the same moment. तो क्या बोल रहे हैं, जापान जब ये ग्रो किया, जब पृथ्वी जापान को देखा कि कैसे जापान ग्रो किया, she showed the confident strength of maturity and the freshness and infinite potentiality of new life at the same moment. The fear was entertained that it was a mere freak of history, the child game of time, the blowing up of a soap bubble, perfect in its rondeur and coloring, hollow in its heart without substance. So लोग ये डर रहे थे कि ये substantiated नहीं है, इसका कोई foundations नहीं है, it's like a soap bubble, कभी भी किसी moment पे फट जाएगा, it's like a हॉलो जिसका कोई हार्ट नहीं है, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स गेम, इट्स लाइक अ मेयर फ्रीक इन हिस्ट्री, मतलब एक अचानक से हो गया पर और दूसरी बार नहीं हो सकता है, या ये जो हुआ है लाइक इट लाइक बबल टाइप का है, इट्स नॉट फाउंडेड, इट्स नॉट ग्राउंडेड. But Japan has proved conclusively that this sudden revealment of her power is not a short lived wonder, a chance product of time and tide throw up from the depth of obscurity to be swept away the next moment into the sea of oblivion. क्या बोल रहे हैं? But Japan has proved conclusively that this sudden revealment of her power is not a short lived wonder, a chance product of time and tide, thrown up from the depth of obscurity to swept away the next moment into the sea of oblivion. तो जापान प्रूव किया ये एक मेयर मोमेंट इन हिस्ट्री नहीं है, मेयर फ्रीक इन हिस्ट्री नहीं है, ये मेहनत का काम है, ये मेहनत से इस जगह में वो लोग अचीव किया है. ऐसे नहीं कि मतलब कल को कोई और नया अपडेट आ जाएगा या नया ट्रेंड आ जाएगा, मतलब दिस इज सो फकिंग इंटरनेट वर्ड्स नाउ, लाइक कुछ नया चीज़ होगा एंड ये जो जापान के अचीवमेंट्स है काफ़ी छोटा दिखने लगेगा, ऐसे बात नहीं है. एंड जापान ये कंक्लूसिवली प्रूव किया है. The truth is that Japan is a old and a new at the same time. तो बोला जा रहा है कि जापान ओल्ड भी है एंड न्यू भी है इन द सेम टाइम. She has a legacy of ancient culture from the East, the culture that enjoins man to look for his true wealth and power in his inner soul, the culture that gives self possession in the face of loss and danger, self sacrificing without counting the cost or hoping for gain, defiance of death, acceptance of countless social obligations that we owe to men as social beings. क्या बोल रहे हैं? She has a legacy of ancient culture from which the East, the culture enjoins man to look for his true wealth. Okay, give me 2 minutes, okay? Give me 2 minutes, I'm just कोई गाना वाना सुनते हैं एक सेकंड के लिए, ठीक है? I'm too sleepy right now, by the way. क्या खुला हुआ है? एक सेकंड, what the fuck? By the way, what do you think about this flying beast divorce situation going on? Do you really think it's real? महजूस का वीडियो देखेंगे, ये गाना सुनेंगे, क्या करते हैं?
By the way, what's up with Riya Gogoi now? ये देख लेते. हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो. आज की वीडियो थोड़ी सी होने वाली है सीरियस. इन दिस वीडियो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड इविल आई. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑल नो व्हाट इट. There is no shot. This okay. ये बंदा का मुंह देखते हैं ना, लाइक ऐसे नहीं लगता कि ये कोई सीरियस बात है. I'm sorry. But for those who don't know, I'm still gonna explain it. Evil eye is basically when someone looks at you with jealousy or envy and बुरी नज़र के बात कर रहे हैं. brings bad luck or bad energy which can harm you in serious ways. It brings misfortune to especially someone who is admired by a lot of people. हिंदी में जैसे कहते हैं नजर लगना, नजर उतरवाओ, नजर लग गई, all that stuff. We're going to be talking about that today. And in today's video we're going to be talking about how specifically social media influence I'm afraid मेरे को डबल नज़र लग जाएगा अभी. 1 2 3 4. Okay, sorry. are very vulnerable to this thing. Since social media influencers have gotten a lot of eyes on them, the public visibility, the millions of views on their content, the fame they're surrounded with, controversies they're surrounded with, and only one person is enough to cause the damage. And Flying Beast has over 9 million subscribers on this channel. So imagine the probability. A lot of influencers, celebrities, show off their wealth. It can be music artists in their music videos, showing off their expensive cars, jewelry, the mansions, the glamorous life basically, which a lot of people desire to have, and you don't know how many of them are looking at your glamorous life with a jealousy point of view. So just imagine. And it's a very big reason why many celebrities at times they feel very restricted to lead a normal life. At times they have to keep bodyguards, security, etc. They deal with issues like social anxiety, trust issues, वगैरह. So it's a very problematic life, to be honest. It attracts a lot of bad energy, a lot of fake people, a lot of eyes on you. That is the main thing which causes the downfall in many cases. Only and only because there are a lot of eyes on you and you don't know how someone is looking at your things. Everyone is heavily interested in your life, especially in your personal life. In today's video, we're going to be talking about a social media influencer, a family vlogger, Flying Beast, Gaurav Taneja, who at this point is surrounded with a lot of controversy regarding his marriage. I'm sure most of you all know about his... By the way, ये reaction serious reaction नहीं है. I'm just like refreshing myself for like reading the next part. I'm just इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? I will make a video on this whole thing, not on Azuz per se. I'll make a video on like this whole fucking Mr. Beast नहीं क्या Flying Beast situation, okay? But yeah, I'm not like critically reacting on it, okay? I'm just using his content like to like to feel refreshed. क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, प्लस नींद आ रही है. एक सेकंड. situation which is very sad for the kids. Gaurav Taneja की वाइफ रितु राठी ने गौरव के ऊपर बहुत सारे allegations लगाए हैं. She has accused him for cheating on her multiple times. She has apparently read his chat, seen the hotel booking records जहाँ कहाँ से मिल रही है सब चीज़ें? एक सेकेंड. Serious issues started arriving when the couple was pregnant for the second time. It was very difficult and challenging pregnancy for Ritu. Okay, I think Gaurav and Ritu has talked about this sometimes. Source Reddit. Reddit का कहाँ? Like you cannot say just Reddit. Like कहाँ? Where? But okay, it's like saying कि source Facebook. Yes, but like which page of Facebook or which account? एटलीस्ट कुछ लिंक विंक दिया है क्या? I'm sorry, पता चला कि लिंक दे दिया मेरे, मैं ही उसको गली आ रहा हूँ. नहीं दिया, थैंक्स. नहीं तो लाइक आई वुड लुक बैड. ओके, अगर दे दिया होता तो आई वुड लुक बैड. Serious issues started arriving when the couple was pregnant for the second time. It was very difficult and challenging pregnancy for Ritu. Plus, there was very clear pressure from Mil and Gaurav that they wanted male child. Mil कौन है? Okay, I guess. Okay, this is some problematic territory we are going here. Okay, listen. Shit. I don't want to talk shit about Gaurav Taneja, but holy shit, he looks like a asshole right now. Okay, I'm sorry. Okay.
हम इसके ऊपर लाइक एक क्रिटिकली वीडियो बनाएंगे, बट लाइक नाउ आई एम जस्ट लाइक होली शिट, ही लुक्स लाइक एसोल. Not only because of this, like there was also that video in which he was like, uh, men go through a lot of shit during, uh, I don't know, like wife giving birth. Their wife doesn't talk to. Shut the fuck up. Also, I know it's very easy to judge from outside. I didn't have a kid in my life. मतलब obviously I'm not married. Obviously, मेरा 21 साल उम्र है. What the fuck am I talking about? But yeah, but it's cringe. It's cringe. The least to say. But yes. When a baby girl was born, they were clearly disappointed. Okay. Fuck. Okay. What the fuck is this? This is some crazy conservative shit going on here, okay? I'm sorry. I'm sorry. इसके बाद if इसके बाद I myself will have trust issues believing people who like says संघी shit. Like कोई भी अगर संघी shit बोलेगा ना इसके बाद मेरे राउंड में, I'll start thinking about their fucking family life. Holy shit, this is so bad. Maybe मेरे को लग रहा है, I don't know. Fuck. This really hurt Ritu. They kind of drifted apart because of the gender of the second baby and how Gaurav and his parent took it. Holy shit. Dude, you are his dad. You are her dad. What the fuck? It's your child, dear. It's your child. It's like ये वाला आर्ग्यूमेंट मतलब मेरा इस पॉइंट के लिए भी है. ये वाला आर्ग्यूमेंट मेरा वो जो वीडियो है, मेन को कुछ जाना पड़ता है ड्यूरिंग like after the childbirth or something like that. Dude, it's your child. Take care of the child. Yes, your wife will talk with you. Your wife will open up about what she's going through, what she's feelings. But like, at least take care of the child. I mean, I I guess you can still say that. Well, depending you like you never had a fucking child, right? But in the same place, it's so bad. Holy shit. Or am I the only one like feeling that this is bad? I don't know. Fuck. It was at this point Gaurav started immersing himself in very time consuming hobbies to stay away from home, mostly deliberately. Ritu had entire household and children's burden on her shoulders, but took everything because it is okay. It is the duty of a good wife to do it. Okay. I'm sorry. I don't know what's the source. Okay. I don't know what's the source, but this is bad. Dude, you are flying beast. You had 9 million subscribers. Okay. You have 9 million subscribers. You are the flying beast. You can afford like like I don't know, a servant. You can afford like a bunch of people. You can afford like a nanny. Okay, it's not her duty. Okay, it's yeah. It is like a couple's duty to take care of their offspring. That's cool, but like yes, it's socially like expected from the mother to do it. But like holy shit. ओके या तो बहुत ज़्यादा करके इस रेडिट पोस्ट पे लिखा हुआ है जो हमको गंदा तरीके से ट्रिगर कर रहा है. आई एक्सपेक्टेड अ रिलैक्सिंग फकिंग वीडियो, इसीलिए जूस के वीडियो खोले थे बिकॉज दैट गाय इज़ लाइक द फनी गाय जो यू नो ही फील्स लाइक दैट गाय जिसके साथ तुम चाय पे बैठोगे तो यू विल लाइक फ्रेशन अप योर मूड विद इन लाइक 10 minutes और सो. बट लाइक व्हाट द फक इज दिस वीडियो, होली शिट. आई मीन नॉट उसके वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द टॉपिक इज सुपर डुपर फक्ड अप. This is some crazy Sangi shit going on. I'm sorry. The thing is, again, ये वाला portion भी started immersing himself in very time-consuming hobbies to stay away from home, mostly deliberately. ये वाला portion हम लोग काफ़ी तरीक़े से पढ़ सकते हैं, ठीक है? He might actually start getting those hobbies like as a genuine like, but you as a father, you as a husband have some duties, have some responsibilities to the house. It's not just giving money.
Like, it's your child, take care of the child a little bit, okay? Like, again, it's not a advice that I'm giving, it's just like the most, you know, I don't know, fuck. I don't know anything about anything, okay? I'm a fucking idiot. Ritu did not want to accompany Gaurav on big trips that he used to take very frequently, and especially on Deska Dhoni, because it meant being away from the kids for a very long, and it was a long, uncomfortable, and unnecessary journey. Yes, obviously. But Gaurav wanted to. Sorry, क्या करें? क्या करें? Ritu did not want to accompany Gaurav on big trips that he used to take very frequently, and especially on Deska Dhoni, because it meant being away from the kids for a very long, from आ क्यों पढ़ रहे हैं? Kids for very long, and it was a long, uncomfortable, and unnecessary journey. True. But Gaurav wanted someone to take care of him, and probably. Okay, sorry. That was such a man child take. Holy shit, like. I mean, I usually talk about men's rights and stuff like that. I usually talk about when like men are like unfairly, like when unfair things happen to men, why men are like expected to pay. Like in first days, men are always expected to like initiate dates and stuff like that. I usually talk about these things, but like this is some crazy level of uh, thing going on Ritu's part, okay, or Ritu ma'am's part. Sorry. Uh, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक्सपेक्टेशन होना अलग बात होती है बट लाइक एज अ डैड एज अ हस्बैंड यू हैव समथिंग टू डू राइट लाइक यू शुड डू एटलीस्ट इवन इफ आर जस्ट प्रोवाइडिंग मनी लाइक एटलीस्ट लाइक हायर अ नैनी और समथिंग आई डोंट नो it's it's also very hard to like comment you should do this thing for your family. Yeah, it's very bad thing to do it, okay? मतलब मैं अपने relatives के family पे भी ऐसे बात नहीं करते. I'm talking about like a random fucking guy's family. But like, yes, clearly something is not working out here. Okay, sorry. Also, I don't know ये कितना ज़्यादा सही है. It's just a fucking Reddit post. Yeah, जो अजूज ये वीडियो में प्ले किया, आई डोंट नो इट्स अजूज. अगर अगर गलत है कुछ, इस बंदे को जाके पकड़ो, ठीक है? पकड़ भी नहीं सकते, ये बाहर रहता है भाई द वे बंदा. But Gaurav wanted someone to take care of him, and probably for a little. Okay, sorry, and probably for a little content. Gaurav was mean to Ritu and shouted at her during Deshka Dhoni in front of the crew and filming teams multiple times. Their marriage was almost in shambles after Deshka Dhoni. I'm sorry, this looks okay. I maybe was unfair to like Gaurav Taneja because अभी मेरे को लग रहा है this is like a fucking fan fiction written by like some idiot on like Reddit. I don't know. Okay, this is some idiotic shit going on. This is uh, in front of filming crew अगर बात कर रहे हो that doesn't mean like ये दोनों like individual से कोई statement तब नहीं आया है, right? Like what the fuck am I reading then? Their marriage was almost in shambles after Deska Dhoni. After that, Gaurav started to travel to Mumbai every alternate day to work on editing and making his great project. Sorry, making his great project of Deska Dhoni. Ritu was Ritu very strictly said she will not accompany him. It was during this time he cheated on her. Okay, you don't know shit. You don't know shit. Don't make up shit. Holy shit. Don't make up like things. If you don't know it, you don't know it. Shut the fuck up. I mean, I was like extremely harsh towards Gaurav in the beginning because he was an idiot. I'm sorry. Like he sounded like a fucking man child. But in the same place, holy shit, this is some like
like fan fiction going on here, okay? Like the cringe TikTok fan fictions नहीं होता था, वैसा टाइप का सिचुएशन है इधर. It was during this time he cheated on her. He cheated on her. No allegedly, no nothing. He cheated on her straight up. Yes. Not sure if it was an escort or a friend who said it. Ritu got to know about this later by checking his phone chats. Okay. Where did you get it from? Gaurav was used to get online paid sex services on shady websites, which Ritu caught red-handed. This is so like detailed, like private information. I don't know how these fucks are getting. Okay, I'm not like you a usual like Gaurav Taneja watcher, but I believe like these are the things that they will not talk in vlogs, and like आई डोंट नो लाइक कौन बोल रहा है ये सारी चीज़, कहाँ से ये सारी चीज़ आ रही है, या दिस अ स्ट्रेट अप फकिंग फैन फिक्शंस गोइंग ऑन. आई हैव नो फकिंग आइडिया. Ritu used to think his friendship with Honey Singh. Ritu used to think his friendship with Honey Singh was not okay and did not want her little daughters with that man. Okay, that is evident. He was not the best guy to be around children. That's true. However, Gaurav did not agree to her on this, and they had a big fight on it. Recently, Ritu caught Gaurav cheating again with somebody or someone, and he was booking hotel rooms for this. What's the ये what's the like कहाँ से मिल रहा है तुमको? Like again, these are things हम जब पढ़ रहे हैं ना, हमको लग रहा है कि this is straight up fucking made up shit, okay? Because देखो, अगर if Ritu ma'am या कोई भी या even Taneja, Gaurav Taneja would have admitted on it, या Ritu ma'am said कि well this happened, then I'd like probably give it like 200% more like importance. But holy shit, like where are you getting this from? Where the fuck is the evidence? Evidence तब बोलेंगे ना जब allegation actual party से आएगा. This is some bullshit going on. Maybe not, I don't know. Maybe I'm an idiot, okay? Maybe I'm an idiot. Just, yeah. Recently, Ritu caught Gaurav cheating again with someone, and he was booking hotel rooms for this. Usually, after getting caught every time, Gaurav used to apologize and pacify her, but he did not do it this time. This was the last thread, after which Ritu decided to move to her sister's house away from him. Okay. ये allegations rise किए हैं, but proof अभी तक कुछ है नहीं. Please can. Okay. Azuz, listen, brother, I love you, but अगर ऐसे serious allegation किसी पे लेवी कर रहे हो किसी Reddit post के through, try to like at least like link the like thread or link whatever जहाँ से भी तुमको ये allegations मिल रहा है, because these allegations are not coming from like the individuals involved in this case. ये allegations रीतू मैम से नहीं आ रही है, ये एलिगेशंस ये रीतू मैम का कोई ब्रदर से नहीं आ रही है, रीतू मैम का कोई फैमिली से नहीं आ रही है, या कोई पार्टीज इन्वॉल्व से नहीं आ रही है. इवन लाइक गौरव इज नॉट सेइंग, गौरव सर इज नॉट सेइंग कि वेल आई हैव डन इट, आई एम सॉरी आई हैव डन इट. नो, it's coming from random Reddit users. If you are using this as an allegation, try to like at least link that in like the description or something like that, or at least उसका एड्रेस दे दो कि कहाँ मिल रहा है, कहाँ थ्रेड हम लोग देख पाएंगे, ताकि हम लोग अपने आप से like डिसाइड कर पाएँ कि इसको सीरियसली ले या ना ले. एंड टू बी ऑनेस्ट, लिसन, दिस वाज अ like load of bullshit. हमको लगा कि like my guess would be this was a load of bullshit, like this some made up shit. Okay. Will be a rumor since there is no proof, but our audience doesn't really need proof before jumping to form an opinion or hating on someone. True. She even told ki Gaurav started acting distant after our second child because he wanted a baby boy instead of a baby girl. Are you lost, baby girl? क्या joke मारा भाई? Sorry. Apparently, Ritu Rathi is a very close friend of Honey Singh. Gaurav always had a problem with it because he did not want Honey Singh's influence falling onto his kids, which is. एक सेकंड उल्टा लिखा हुआ था ना Reddit पे. एक सेकंड, Reddit पे उल्टा लिखा हुआ था.
Ritu used to think his friendship with Honey Singh was not okay and did not want her little daughters. Okay, either Azuz is saying wrong or this is a fan fiction. Yes. jumping to form an opinion or hating on someone. So she even told ki Gaurav started acting distant after our second child because he wanted a baby boy instead of a baby girl. Are you lost, baby girl? क्या जोक मारा भाई? Sorry. Apparently, Ritu Rathi is a very close friend of Honey Singh. Gaurav always had a problem with it because he did not want Honey Singh's influence falling onto his kids, which is अगर इसका सोर्स अगर रेडिट का ये थ्रेड है जो आप पोस्ट किए हैं तो आप गलत है. अगर इसका कोई और सोर्स है प्लीज़ try to post that, okay, please. Then that will like directly like contradict with the Reddit post that you showed, by the way. ironical because what influence is the father himself putting onto his kids, man? If and only if all these allegations made by Ritu Rathi and Gaurav are true, because we still don't have proof. Half of these things Ritu Rathi didn't like do the half of the allegations though, did she? Or am I like getting like psychotic over this thing? It's like a random Reddit user did it, no? Like if the one party did like the allegation thing, it means something at least. Like if a random Reddit fucking dickhead is doing it, like that doesn't mean anything. Again, I'm not saying it is done by a random dickhead, but like yeah, ये third person पे लिखा गया है, ये second person पे नहीं लिखा गया है, या sorry, ये first person पे नहीं लिखा गया. It's not saying कि I and Gaurav Taneja or something like that. It's saying like this एक थर्ड पर्सन व्यू से लिखा गया है स्टोरी, राइट? सो कोई तीसरा बंदा लिखा है, रितु राठी ने नहीं बोल रहा है, राइट? ओके. can be false. Half of these things can be rumors. We don't know both sides of the story. We don't really know the We don't know anything. entire matter. So things have escalated to a point where Ritu is no more seen in the vlogs or any Instagram posts of Gaurav. So it's pretty evident that something is up and she has been distant ever since. But how did all of this personal matter come into limelight? How did people start figuring this out? So there is this YouTube channel Bhajan Mar जो प्रेम आनंद जी का है, जहाँ पे कुछ सालों पहले हमें गौरव तनेजा और ऋतु राठी साथ में दिखे थे, ये पूछते हुए कि पति पत्नी का साथ 7 जन्मों तक होता है या नहीं, and they were taking his blessings for their marriage. और इस कंट्रोवर्सी का जो पूरा मैटर स्टार्ट हुआ है, जहाँ सब चीजें पब्लिक हो गई, started from this channel only where a clip went viral on Reddit जहाँ पे एक लेडी गैदरिंग में बैठी हुई है covering her face who was no other than Ritu Rathi, गौरव तनेजा की wife. The audience recognized her and she asked प्रेम आनंद जी कि उनको अपने पति से अपमान मिल रहा है, things are not fine in her marriage anymore and she wants to separate from her husband and live alone with her kids. क्या उनको अपने बच्चों का हक लेना चाहिए? महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ. श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं. प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम करना चाहिए? इस क्लिप के बाद सबको शक होने लगा, पूरी कंट्रोवर्सी पब्लिक हो गई और ऑडियंस का शक और स्ट्रांग हो गया जब उन्होंने देखा कि ऋतु व्लॉग से भी गायब है, इंस्टाग्राम के पोस्ट से भी गायब है. शी इज नॉट सीन विद फ्लाइंग बीस्ट एनीमोर. शी इज नॉट सीन एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया विद फ्लाइंग बीस्ट एनीमोर. सो इट ऑल मेड सेंस. पीपल कनेक्टेड द डॉट्स एंड फिगर्ड एवरीथिंग आउट. और ये सिर्फ अभी से नहीं, बहुत टाइम से हो रहा है. Cause if I play a clip from 5 years ago of Ritu Rathi, it's very evident from her tone, from her body language and the things she is talking about her marriage that she was unhappy since a very long time and she was just keeping up with everything because she has 2 kids to take care of. मुझे ये चीज़ समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद कि पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है. मेरे साथ ऐसा नहीं होता. आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम. मेरे को इसमें No, the purpose of this video was not to say that she was unhappy or something like that. The purpose of this video was कि well, तुम जो देखते हो वो सच नहीं होता है. तुम जो एक परफेक्ट कपल देख रहे हो, that is not true. Okay, that is not always true. सब परफेक्ट कपल में भी कुछ इम्परफेक्शंस होती है, लोग का इनसिक्योरिटीज़ होती है, लोग का वल्नरेबल मोमेंट्स होती है, लोग एक दूसरे को अच्छा से टाइम नहीं दे पाते, अच्छा से जो चीज़ें एक दूसरे को चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते. वो मॉनिटरी हो सकते हैं, वो फिजिकल हो सकते हैं, वो टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दैट्स व्हाट she was trying to explain. She was not trying to complain that she is not getting something. She was trying to explain कि कोई कपल परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? Like yes, that's the purpose of this video, by the way. मतलब अजूज का नहीं, मतलब रितु मैम का.
बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, इनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीज़ें करनी है। लास्ट में मैं आऊँगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स Also remember, it's like okay, fuck. Also remember, it's there is no side of the story, by the way. I was gonna say it's her side of the story, but like she's trying to be as charitable as possible though. Like she's trying to explain कि सब सही नहीं होता है, हम लोग जो perfect दिखते हैं वो perfect है नहीं. That's what she was trying to explain. But in the same place, it's evident that she is going through something. She is not happy always in the marriage, right? Like something is going through. That's what she's talking about. But yes. में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज। True, yes. Yes, that's the point of this video कि एक दूसरे को समझने के लिए like एक दूसरे का problems एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे के insecurities एक दूसरे को समझना पड़ता है. We cannot call each other insecure and like move on. Like कहीं कहीं हम लोग को देखना पड़ता है, एक दूसरे का मॉनिटरी नीड्स हो सकते हैं, फिजिकल नीड्स हो सकते हैं, टाइम का नीड्स हो सकता है, क्लोजनेस का नीड्स हो सकता है. ये हम लोग को समझना पड़ता है. एंड yeah, that's what she's trying to explain here. Nothing is perfect. आप इधर देख के like भावनाओं में बह मत जाओ. That's what she was saying. I guess that's what she was saying. I don't know. करने पड़ते हैं, और YouTube की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ Yes, that's what she was trying to explain. Yes, yes. परफेक्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये है कि जो इतना मिले ना तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को ज़बरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। बट सबकी एक लिमिट होती है. सो रितु एंड गौरव हैव बीन मैरिड फॉर 8 years नाउ. दे गॉट मैरिड इन 2016, राइट? सो ऐसा क्या हुआ कि जहां ये दोनों एक पॉइंट पे प्रेमानंद जी की ब्लेसिंग्स ले रहे थे अपने रिश्ते के लिए, आज उन्हीं के सामने डिवोर्स की बातें हो रही. सो द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बकचोदी मत कर लौड़े. Sorry. Simple answer, evil eye. Nazar. It's a real thing, guys. Trust me, it's a real thing. I'm not saying there is no one to be blamed. Of course, यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं. There are wrongdoers. And a lot of people are even gonna argue saying कि treating someone bad is a personal choice, cheating is a personal choice, what does evil have to do with this? Well, that's how evil eye works. It changes the course of things and it takes you to a path of downfall. There's a video that... No, this is a fucking cope, okay? I'm sorry. I don't know how serious is a... Sorry. I don't know how serious Azuz is when he says that it changes the path or something like that. Yes, cheating is a personal choice. There might be situations that you are in that like might make you feel something that you cheat, but like yes, it's your responsibility. You are taking the decision to do certain things. Yes, you cannot like these are fucking cope things, okay? ये ग्रह इसके सामने आ गया, उसका नज़र लग गया, उसमें बाण मार दिया. नहीं, this is stupid fucking shit. If you're doing something, take the fucking responsibility of it. That's it. The end. Goodbye. Yes. I think I don't know like how much whatever Azuz is saying कितना ज़्यादा metaphorical है, कितना ज़्यादा literal है, I don't know, but like yes, this is a stupid argument. Ritu has uploaded on Instagram talking about the whole situation, and it's pretty evident from this video that Ritu has faced a lot in her marriage, and for the sake of her kids she has to be strong. अब काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई there are so many family vloggers out there, so many celebrities, influencers जिन्होंने अपने relationship को public कर रखा है. So was the Flying Beast family the only victim of evil eye? No, definitely not. I can name you so many social media couples, so many family vloggers that have gone through something similar and faced a downfall in their marriage or relationship to a point where they got divorced, they had to quit family vlogging. Okay, Azuz, look at me, okay? Look at me. This is not a problem of evil eye. This is a problem of bad family management, okay? And yes, ये हम लोग को दिख रहा है because ये लोग vlog कर रहे हैं इसके बारे में, ये लोग बातें कर रहे हैं इंटरनेट पे इसके बारे में. एंड यही चीज़ किसी हमारे दोस्त के साथ, आपके दोस्त के साथ होता तो हम लोग को दिखता नहीं. It's a thing that happens in marriages. एंड सैडली हम लोग के सोसाइटी के अनुसार सेपरेशंस उतना इजी नहीं है कपल्स के लिए, इसीलिए बहुत सैड स्टेट्स पे भी लोग रह जाते हैं एक एक रिलेशनशिप पे. एंड दैट इज़ अ रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, ओके? आप बाहर रहते हो बट लाइक हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं. आई थिंक
wait, is he like Indian or is he NRI or is he like POI? I think I think he's an NRI, right? Like he's not a POI, right? Like is he born in India and बाहर गए हैं या like बाहर में जन्मे हैं? I don't know. Fuck, who cares? Yeah, if you're yeah. That's the reality of our country, right? uh, it's not evil eye, it's not. Yes, कहीं बार इंटरनेट में कंटेंट बनाने के लिए हम लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते. इन्वेस्ट मतलब हम टाइम, मनी, एनर्जी, सब कुछ की बात कर रहे हैं, ठीक है. तब क्या होती है, तब एक रिलेशनशिप वीकेंड हो जाते हैं हम लोग और लोगों से बातें करना शुरू करते हैं एंड रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप करना शुरू हो जाते हैं. बट दिस इज़ क्लियरली नॉट वन ऑफ दोज केसेस. दिस इज़ क्लियरली, if it is true, if the Reddit post that you showed is true, one person is clearly like in the wrong here. Okay, Gaurav Taneja is clearly in the wrong here. I I don't know how, like, is what he showed in the, like, जो आप दिखाए स्क्रीन पे वो रेडिट पोस्ट सही है, ये गलत है. सही मतलब हम उसका फैक्चुअल सहीनेस के बात नहीं कर रहे हैं, हम उसका लाइक कहाँ से ये रेडिट पोस्ट सोर्स हुआ उसके बात कर रहे हैं. If that thing actually happened, then one person is clearly in the wrong here. It's not a problem of evil eye. It's not a problem of like the audience trying to separate these two persons apart. One person is seriously going through shit right now. Okay, it's not complicated. It's something wrong is going on here. Like it's not complicated. Yeah, fuck it. Holy shit. Their public image, their credibility, so many things, man. I can name you a few. You can search them up on YouTube. You will know everything. Shade Art, Sheikh Al, and Colette Butler have faced a lot of difficulties in their marriage since 2017. Micah and James Toffer, who faced a lot of backlash in 2020 when they rehomed their adopted son who had special needs. Jake Paul, man, biggest example. Jake Paul got married in 2019 within a few. Okay, no shit. He's that was a joke marriage. That was not a serious marriage. Holy shit. Okay, Azuz, मत करो, ठीक है. Don't give these examples. Jake Paul's this is a stupid fucking example. Jake Paul's marriage was not not a serious marriage in the first place. It was supposed to be like a content marriage. What do you mean? Months broke up, divorce. Yes, that's a joke marriage. That was not supposed to like they didn't marry each other. Like that was a content marriage. Everybody knew it. Like it's a meme. Yes, that's a meme. Move on. A lot of controversy. It's not the same as Gaurav Taneja's marriage, because Gaurav Taneja had 2 kids with this person. 8 years एक साथ रहे हैं. This is not the same thing we are talking about. Happened with the LeBron fam when they decided to talk about their daughter's cancer situation, which a lot of people did not like because they thought that these people discussed it in a very poor manner. It was a very sensitive topic and had to be discussed in a proper manner. तो उसकी Yes, true. कहीं बार होते हैं कि आप कुछ चीज़ें बातें करते हो, लोग उसको एक तरीके से परसीव करता है, एंड जब एक तरीके से परसीव करता है वो ऑल द साइड्स ऑफ द रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ किड्स में दूसरा भावनाओं पैदा करते हैं, एंड वो भावनाओं कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है. दैट माइट ब्रेक द रिलेशनशिप. दैट इज़ डिफरेंट. अगेन, Gaurav Taneja's case is not like that. If whatever is being claimed had happened, then one is clearly in the wrong. से बहुत backlash मिला, बहुत criticism मिला. The Knife Nulls divorced because of cheating in 2016. There are many out there. I don't know if you guys know, but this year there was this Pakistani couple. I'm sure you might have seen them somewhere or the other on your feed. It's very recent. They also went through a divorce. Reason is still unknown. All these family vloggers, social media couples are just examples that highlight the challenges that comes with putting your family or your personal relationships out there in the public eye. It just shows that the pressure of No. Divorces happen. That's it. Marriages are supposed to fail to some degree. Marriages are not supposed to exist for eternity. Okay, it's not like सात फेरे वाली चूती चीज़ है, ठीक है. If people are not compatible with each other, like people, I think
divorce is a good thing, okay? At least in our society, it should be more normalized, it should be more mitigated, ताकि जल्दी हो जाए. इसका legal process इतना ज़्यादा fucked up है. Like there are people you see will call themselves separated, still cannot marry anybody else, still cannot move on with their lives. They're still technically like married in legal terms, but like separated. They live separately. Yes, like divorce is supposed to happen. Okay, divorce is a thing that happens. Like not everybody is compatible with everybody. One side should not be like biting the bullet every time. Okay, relationship पे there is always one side, not always the man, not always the woman. There's always one side जो कि सबसे ज़्यादा like biting the bullet करते हैं, सबसे ज़्यादा अपने आप को compromise करते हैं, अपने needs को compromise करते हैं to keep the relationship going on, right? Yeah. Scrutiny and the constant demand of content can strain even the strongest relationships out there to a point where they just break. Yes, वो तो तुम जैसे केसी नेस्टर वाले बात करो. He was saying that he wasn't able to give his family anytime, his children anytime. He was always thinking about content. He was not able to like talk with his family. Yes, that is a different thing. Evil eye. All of this also shows us that family vlogging is a very shallow genre of content creation and has a very Listen, no, it's not. It gives the audience a good storyline, a good feel good like type of things. एक storyline जिस पे आप invest कर सकते हो, जो कि एक real ish like लोग को depict करता है, जो जिसके बारे में आप root कर सकते हो, जिसके like आप जिससे inspirations ले सकते हो. Obviously, like this is not a bad or shallow content. There are certain lines that should not be crossed. There are certain things that these people should like keep in mind while doing this content. Like children का बहुत ज़्यादा private चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए. Children को दिखाने में थोड़ा सा like there should be more sensitivity to children and children related content. But in general, if you are saying that family content is shallow, I think it is stupid to say that. But okay, you are entitled to your opinion. Dark side to it. What you all usually see on the screen is not actually the complete truth. Most of the times they're just pretending to be happy for the sake of views. And people get so heavily influenced with the fakeness that they try to find something similar in their own relationships and never achieve it because what they were chasing it was hollow from within since the start. It was just your mind that was believing the opposite because that's how it was presented to you. Because to be honest, masle kis ghar mein nahi hote hain. Har ghar mein there are differences in every household. There are problems in every household. But it's just people who just show the good side, which at most of the times is pretentious, fake and flashy. There's a reason why people say keep your personal matters, your relationships, your wealth, your income, your success, your growth, keep it all to yourself. Keep it private. If you really want to dig your own grave, the best way to do is by showcasing your personal life in public domain because then that... Ek second. That's their content. That is their like achievement. That is their career. Yes, they have gained a lot of subscribers. They have gained a lot of money through this. This is not like they're showing their family for free. That's their content. Yes. What do you mean? only leaves you vulnerable to evil eye, but you also gotta face the backlash in real life. Coming back to Gaurav, as we all know how our Indian audience is, they all hopped on the bandwagon and started throwing all sorts of comments, hate comments, calling Gaurav a cheater and whatnot, that she deserves better, blah 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 blah. It's very normal, which I feel the audience shouldn't be doing because, again, you're hurting a family's integrity. But who is gonna explain this to them? And this was supposed to happen, there is no control over it. ये backlash तो आएगा ही. To which Gaurav Taneja did not really react to, also said कि मुझसे इस मैटर पे कोई भी explanation expect मत करना, और तो और he even said कि family के personal matters को social media पे discuss नहीं करना चाहिए. But somehow it was okay for Mr. Gaurav to showcase the delivery of both of their children and upload a video of it on his channel. Man was recording in the hospital. That time it wasn't personal. You kept a camera on your family's face every single day and showcased the fake happiness in your family in the name of content, but now suddenly it's personal matters. It wasn't personal when you were recording the delivery of your children. It wasn't personal when Ritu uploaded videos of complaining about her marriage and how she was... No, she was not complaining about her marriage. She was saying that no marriage is perfect. You just like ये देख के बहम मत जाओ. That was the point. Holy shit, like ये वाला point हम इतना जन के पास देखे कि she was complaining about her marriage. She was complaining. No, she was not complaining about her marriage. She was saying कि कोई marriage perfect नहीं होता है, हमारी भी perfect नहीं है. ये इसलिए हमारे marriage देख के आप बहम मत जाओ. That was the point of her. Okay. Holy shit.
being treated the right way. It wasn't personal when you were having your fun time out there, and I'm sure it wasn't personal when you were exploiting your own children for views. But now that you're facing a backlash from your own audience because of your own behavior, which is causing a downfall in your own marriage, it has become a personal matter. Yes, justified. Now a lot of narratives can be said ki bhai, is this all a PR stunt? Is this all being done for attention? I don't think so. It doesn't look like at all. और hypothetically अगर मान भी लो कि हाँ ये लोग attention के लिए कर रहे हैं तो loss किसका है? इन्हीं का तो है. Like Ritu and Gaurav are already suffering, but you know who's suffering the most? Their kids, bhai. They're so young. इनकी क्या गलती है? They didn't have a choice. They didn't choose to be born in a vlogging family. They didn't even know कि उनका बाप कैमरा लेके खड़ा हुआ था when they were being brought into this world. Man, come on. Poor thing. मान लो अगर अब divorce हो जाता है तो उसका क्या impact होगा बच्चों पे? Father figure missing from their life. They're going to face constant criticism throughout their life from their peers, colleagues, whatever. Because internet is very easily available everywhere at this point. सबको सब कुछ बहुत आराम से पता चल जाए. I don't think they will get criticized per se. I think they will they will have a big ground for sympathy, but I think the problem will also be like people don't want to get sympathy always. People want to like be normal. Agar always they are getting sympathy for a particular said thing, they will get bored of that too very soon. I think that might be a problem, but in the same place, I don't think they will be like getting bullied the fuck out because their dad fucked some sex worker or something like that. I don't know. So it's gonna be a very tough life for both of these kids now. और अगर इस पॉइंट पे आपको ये पर्सनल मैटर वाली चीज के पीछे ही चुपना था तो आई थिंक आपको ये चीज 8 साल पहले सोचनी चाहिए थी. Not gonna lie. Now as I discussed evil eye in this video, a lot of people are even gonna ask कि भाई what is the solution to save yourself from evil eye? Personal opinion कि religion plays a very important role in Okay. keeping yourself protected from evil eye. Good luck to atheists out there. Then दूसरी चीज भाई keep your stuff personal, keep Good your luck shit to to me. yourself. All your personal stuff, keep it personal only. Yes, true. Yes, you are talking about a normal person. Gaurav Taneja, Ritu Rathi are not normal person. Content creators are not normal persons. Average day Joe is not making family vlogs. Yes, and if an average day Joe makes like fucking family vlogs, अपने आप का like अपने wife का like delivery दिखाने के लिए and not getting any money from it, yes, that's a bad thing. True, but like I don't think that applies to like this crazy big family vloggers out there. अपने पैर जमीन पे रखो और आगे बढ़ो बस और कुछ नहीं. Simple as that. So yeah man, I just hope कि सारी चीज़ें settle down हो जाएं at least in a way कि बच्चों पे बुरा impact ना हो. उनकी कोई गलती नहीं है. अपने differences अपने साथ sort करो जो भी है. बच्चों पे impact ना होने दो उस चीज़ का. बाकी that's all for this video man. Okay, listen. हम थोड़ा relax करने के लिए ये वीडियो खोले थे. By the way, I will make like a whole fucking video about this topic. It's kind of cringe, इसलिए हम इस topic को छेड़ना नहीं चाहते थे. But as I already reacted a part of it, I'll react the full thing that's going on. Who cares? थोड़ा बहुत research लगेगा तो कर लेंगे. रुक जाओ, थोड़ा सा गाना वाना चला के गाना वाना सुनेंगे. थोड़ा सा वॉशरूम से आते हैं, ठीक है? रुक जाओ.
हेलो हेलो. आई एम टू टायर्ड. आई एम टू टायर्ड. हम सोचे थे वीडियो देख के थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं. एंड ओके. हेलो हेलो. कोई और वीडियो देखें हैं क्या? आई डोंट नो. आई एम टू फकिंग टायर्ड राइट नाउ. कोई गाना सुन लेते एक सेकंड के लिए. रुक जाओ. आई एम ट्राइंग टू लाइक कंप्लीट दिस. उसके बाद एडिट करके अगर डाल पाएंगे तो अच्छा होगा. कुछ बेला सुन लेते हैं. ਦੱਸੇ ਨਾ ਆਸ਼ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਆਸ਼ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਨੂੰ ले जाए ने भी मुझे नहीं चाहिए ये खैराते तेरी तू ले जाए ने भी सीने में तेरे पानी बची है ये पता तुझे भी इतना ना पीछे पड़ो मेरे जाना तुम खुद भी फर्रे भी इन बातों पे कितना लड़ेगी तेनू हुंदे से ना खाए मेरी जाना इन आँखों से कितों से खेली मेरे बिन हो गई तू एकदम अकेली अभी अब मैं कहती मैं तेरे लिए वेली इससे ना आशिकी मैनू कहनी दी जरा ही आजादी तेनू तोड़ के रखता तू मेरे दिल नू क्यों तेरी दी भी निशानियां पैनू इससे ना आशिकी मैनू कहनी दी जरा ही आजादी तेनू तोड़ के रखता तू मेरे दिल नू क्यों तेरी दी भी निशानियां पैनू उस जख्म पे मरहम लगाती मैं फिर उसके जख्मों को ताज़ा कर देता हूँ मैं वैसे तो आशिक खामोशी का पर तेरी जुल्फों से बातें कर लेता हूँ तू मेरी होके भी मेरी नहीं तो मिलने का मतलब ही बनता नहीं तोड़ा हजारों दफा तूने दिल को तो अब साला टूटने से डरता नहीं बेगाना ही करना था जाने मन पहले ही कह देती अपना बनाया क्यों अब गलियों में तेरी मैं काफिर और सोचूं बेवफा को दिल से लगाया क्यों तू थोड़ी सी मेरी भी सुन लेती तो शायद ये लम्हा ही आता नहीं कांटों पे चलना ही चाहती थी पहले ही कह देती पल के बिछाता नहीं तू कह दे सब गलतियां मेरी है चल तेरी ये बातें भी मान ली पर जब तेरी खुद की वफा डोली कहना मत जाने मन तब मैं अनजान थी इन आंखों में दिखता क्यों प्यार नहीं जाना तू वफा से खुद भी बेजार थी अब पूछे वो हर दिन खुदा से क्यों कर ना सका वो कदर मेरे प्यार की मेरी कदर क्यों नहीं तेनू जाना इन दर्दों को मैं ही क्यों झेलूं तू सहन से निकली ना मेरे पर हुण मेरी यादां नहीं आउंदियां दिसे ना आशिकी मैनू कहंदी दी ज़्यादा ही आजादी तेनू तोड़ के रखता तू मेरे दिल नू क्यों तेरी दी भी निशानियां पैनू तेनू हुण दिसे ना खाए मेरी जाना इन आँखों से कितों से खेली मेरे बिन हो गई तू एकदम अकेली अभी अब मैं कहती मैं तेरे लिए वेली मैं तेरे कहंदी मैं सोचा सी ले लांगे फेरे ताही दा रहिंदी सी मैं तेरे नेड़े वो कह के चला गया हम फिर मिलेंगे Yeah, this is why I watch Bella, okay? This is why Bella is my favorite artist. एक उनका गाना सुनो ना भाई, एकदम माइंड फ्रेश हो जाते हैं. एक उनका गाना सुनो तुम जब डिप्रेस्ड हो, you will feel like home. You will feel, yeah, that's why Bella is the antidote.
एक गाना भी ना, आई थिंक ही हैज अ सॉन्ग कॉल्ड एंटीडोट बाय द वे, आई डोंट नो, फक। बंदे का और एक गाना सुन लेते क्या, तो पूरा पूरी एनर्जी आ जाएगा। I've been like crazy for love. You know me, कहनी तूने हाल क्या बना लिया, तूने किस जबान से मिला दिया, जाना क्यों नहीं आ रहा मेरे काबू में, मेरी सहेलियां जो तेरी ये कहानियां, मुझे अपने आप से मिला दे तू, कैसे जाना तुझे चांद तारे लाके दूं, कहनी मुझे रोज होता रहता डेजा वू, पैसा नशा प्यार तीनों मुझे देगा तू, कहनी कीता तेनू एनालाइज, कहनी हुआ मुझे रियलाइज, तूने मेरे सारे टेक्स्ट किए मिनिमाइज, ज्यादा ज्यादा क्या कि मैनू दे जा मेरी एपेटाइट, तुझे दिखे मेरी खामियां, जाना देखा करो आईना, मेरे साथ रह के दुखी थी, मुझे छोड़ के भी क्या मिला, कहनी तू लाइया, still a desire, on the designer, be my provider, घुमा दे शहर मैनू काले शीशे वाली गाड़ी में बिठा के बजा एम्पलीफायर, क्यों ये दूरियां जरूरी है, सोनी मैनू तेरी गल्लां बातां चुभी है, पागल होने लगी थी तू आशिकी में, मुझे भी तू साथ लेके डूबी है, कहनी तूने हाल क्या बना लिया, तूने किस जबान से मिला दिया, जाना क्यों नहीं आ रहा मेरे काबू में, मेरी सहेलियां जो तेरी ये कहानियां, मुझे अपने आप से मिला दे तू, कैसे जाना तुझे चांद तारे लाके दूं, कहनी मुझे रोज होता रहता डेजा वू, पैसा नशा प्यार तीनों मुझे देगा तू, पैसा नशा प्यार तीनों मुझे देगा तू, bitches, कहनी रोज होता रहता मुझे डेजा वू, bitches, पैसा नशा प्यार तीनों मुझे देगा तू, कहनी बेबी रोज होता रहता डेजा वू। I've been like crazy for this lady पर ये समझी नहीं, तुझे भी बाकियों की तरह वफा जची नहीं, तेरा कोई बेबी बाबा मुझ पे ज्यादा चला नहीं, तो तेरे लिए पहला पहले जैसा रहा नहीं, ये मुझसे बोली शाम। I like this goofy style of video that is done in this album, by the way. The videos are like goofy, like yeah, it's kind of funny, goofy type. Yeah, I really like it, by the way. लो तुम रात में, ये बोली किधर है तू अपन बैठा चांद पे, ये बोली दूरियां क्यों चुनी जाना आपने, मैं बोला जाने जाना तुम ही जिम्मेदार थे, अगर जाना था तो आई ही तू क्यों, मुझे आदतें लगाई तेरी क्यों, दुनिया बनाया मैंने तुझे मेरी, तूने दुनिया दिखाई मुझे क्यों, आशिकी निभाई ही नहीं गई, तुझे यादें मेरी आई ही नहीं, नींदें मेरी टूटती रही, मेरे ख्वाबों में काजल पहना है क्या बंदा? न जाने अनजाने में हम तुमको दिल देके इतना क्यों मरने लगे हैं, तुमको मैं भूलना चाहता हूँ, तारे तेरी बातें करने लगे हैं, इरादे बदल दो तुम्हारे। Wait, like, does he like deliberately try to look like Kabir Singh here, or like is he like looking it like ऐसे दिख रहे हैं? I don't know. अब तेरे काबू में आने नहीं वाला, हम तेरे लिए हैं पागल पर दुनिया के लिए संभलने लगे हैं, कहनी तूने हाल क्या बना लिया, तूने किस जबान से मिला दिया, जाना क्यों नहीं आ रहा मेरे काबू में, मेरी सहेलियां जो तेरी ये कहानियां, मुझे अपने आप से मिला दे तू, कैसे जाना तुझे चांद तारे लाके दूं, कहनी मुझे रोज होता रहता डेजा वू, पैसा नशा प्यार तीनों मुझे देगा तू, पैसा नशा प्यार तीनों मुझे देगा तू, Yes, I got the energy back. चलो पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक पढ़े थे by the way? I don't even remember. Wait, एक सेकेंड। कहाँ तक पढ़े थे by the way? I don't even remember. Wait, wait, तो 56 मिनट्स तक पढ़े हैं, उसके बाद बाकी इतने वेट, तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे टाइप के लाइफ जीना मिजरलीनेस है। The living ideals must not lose their touch with the growing and changing life.
The real freedom is not within the boundaries of security, but in the high road of adventures full of risk of new experiences. तो क्या बोल रहे हैं, ये रियल फ्रीडम नहीं है जो कि चार दिवाली मतलब सिक्योरिटी के चार दिवाली के अंदर रहता है, पर जो एडवेंचर का हाई रोड है वहाँ पर हम लोग को फुल फ्रीडम मिलता है, जो हम लोग को रिस्क में लाता है काफ़ी सारा न्यू एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर्स, एंडेवर्स करने को. Many experiences that we might like and many experiences that we might not. So again, he is going back from this individualistic personal approach to again Japan's talk here. One morning, the whole world looked up and surprised when Japan. One morning, the whole world looked up in surprise when Japan broke through her walls of old habits in a night and came out triumphant. It was done in such an incredibly short time that it seemed like a change of dress, not like building up of a new structure. बोल रहे कि एक सुबह पूरे पृथ्वी जाग के देखा कि जापान अपने आपका जो पुराने दिवाली में वो बंद था चेंज करने जैसे लगा, नॉट अ बिल्डिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर. ये इतना जल्दी हुआ किसी को समझ में भी नहीं आया, किसी को समझ में भी नहीं आया कि ये हुआ कब. She showed the confident strength of maturity and freshness and infinite potentiality of new. Showed the confident strength of maturity and the freshness and infinite potentiality of new life at the same moment. The fear was entertained that it was a mere freak of history, the child game of time, the blowing up of a soap bubble, perfect in its rondeur and coloring, hollow in its heart without substance. So लोग ये डर रहे थे कि ये substantiated नहीं है, इसका कोई foundations नहीं है, it's like a soap bubble, कभी भी किसी moment पे फट जाएगा, it's like a hollow जिसका कोई हार्ट नहीं है, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स गेम, इट्स लाइक अ मेयर फ्रीक इन हिस्ट्री. मतलब एक अचानक से हो गया पर और दूसरी बार नहीं हो सकता है, या ये जो हुआ है लाइक बबल टाइप का है, इट्स नॉट फाउंडेड, इट्स नॉट ग्राउंडेड. बट जापान हैज प्रूव्ड conclusively that this sudden revealment of her power is not a short-lived wonder, a chance product of time and tide throw up from the depth of obscurity to be swept away the next moment into the sea of oblivion. क्या बोल रहे हैं? But Japan has proved conclusively that this sudden revealment of her power is not a short-lived wonder, a chance product of time and tide, thrown up from the depth of obscurity to swept away the next moment into the sea of oblivion. तो जापान प्रूव किया ये एक मेयर मोमेंट इन हिस्ट्री नहीं है, मेयर फ्रीक इन हिस्ट्री नहीं है, ये मेहनत का काम है, ये मेहनत से इस जगह में वो लोग अचीव किया है. ऐसे नहीं कि मतलब कल को कोई और नया अपडेट आ जाएगा या नया ट्रेंड आ जाएगा, मतलब दिस इज सो फकिंग इंटरनेट वर्ड्स नाउ, लाइक कुछ नया चीज़ होगा एंड ये जो जापान के अचीवमेंट्स है काफ़ी छोटा दिखने लगेगा. ऐसे बात नहीं है एंड जापान ये कंक्लूसिवली प्रूव किया है. द ट्रूथ इज दैट जापान ओल्ड एंड अ न्यू एट द सेम टाइम. तो बोला जा रहा है कि जापान ओल्ड भी है एंड न्यू भी है इन द सेम टाइम. She has a legacy of ancient culture from the wealth and day, hoping of. She has a legacy man to look. Okay, give me 2 minutes, okay? ठीक है. I'm too sleepy right now, by the way. क्या? By the way, what do you think about this flying beast divorce situation going on? Do you really think it's real? महजूस का वीडियो देखेंगे, ये गाना सुनेंगे, क्या करते हैं?
By the way, what's up with Riya Gogoi now? ये देख लेते. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो. आज की वीडियो थोड़ी सी होने वाली है सीरियस. इन दिस वीडियो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड इविल आई. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑल नो व्हाट इट There is oh shot this. Okay, ये बंदा का मुंह देखते हैं ना, like ऐसे नहीं लगता कि ये कोई सीरियस बात है. I'm sorry. means, but for those who don't know, I'm still gonna explain it. Evil eye is basically Okay. Okay. I got it. The truth is that Japan is old and new at the same time. She has a legacy of ancient culture from the East, the culture that enjoins man to look for true wealth and power in his inner soul, the culture that gives self-possession in the face of loss and danger, self-sacrifice without counting the cost or hoping, gain, defiance of death, acceptance of countless social obligations that we owe to men as social beings. मतलब ये सारे चीज़ जो एक्सप्लेन किया गया, ये सारे चीज़ जापान के ओल्ड एंशिएंट कल्चर पे है. इन अ वर्ड मॉडर्न जापान हैज़ come out of the immemorial east like a lotus blossoming its easy grace, all the while keeping its firm hold upon the profound depth from which it sprung. It looked like एक ईस्ट का जो लोटस है उसके बीच से जापान ब्लॉसम हुआ, एंड नीचे में सख्त से फाउंडेशन है जापान के पास जो होल्ड किया हुआ है जापान को अपने ट्रेडिशन से, अपने पुराने एंशिएंट कल्चर से, अपने नॉर्म्स से. And Japan, the child of ancient East, has also fearlessly claimed all the gifts of modern age for herself. And Japan, the child of ancient East, has also fearlessly claimed all the gifts of modern age for herself. She has shown her bold spirit in breaking through the confinements of habits, useless accumulations of lazy mind, which seeks safety in its thrift and its locks and keys. क्या बोल रहे? And Japan, the child of ancient East, has also fearlessly claimed all the gifts of modern age for herself. Japan जो चाइल्ड ऑफ एंशिएंट ईस्ट का जो चाइल्ड है, जापान एंशिएंट ईस्ट का जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसका एक डॉटर बोल के हम लोग ऑफस्प्रिंग बोल के देख सकते हैं जापान का अभी मॉडर्न कल्चर को. अभी नहीं, मतलब रविंद्रनाथ के टाइम के बात कर रहे हैं हम लोग. तो शी मतलब जापान हैव क्लेम्ड ऑल द गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न टाइम टू इटसेल्फ. She has shown her bold spirit in breaking through the confinements of habits, useless accumulation of lazy mind which seeks safety in its thrift and locks and keys. Thus, she has come in contact with the living time and has accepted the eagerness and aptitude, the responsibilities of a modern civilization. तो क्या बोल रहे हैं? Thus, she has come in contact with the living time and has accepted with eagerness and aptitude the responsibility of a modern civilization. तो रविंद्रनाथ बोल रहे हैं इधर कि जब जापान अपने ब्रेक थ्रू करके लाइक आगे बढ़ा, देन शी एक्सेप्टेड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो भी लाइक कंस्ट्रेंट्स आती है ग्रो करने से, मॉडर्न सिविलाइजेशन बनने से जो भी कंस्ट्रेंट्स आती है, जो भी क्रिटिसिजम्स आती है, सबको ईगरनेस एंड एप्टीट्यूड के साथ सारे को लाइक एक्सेप्ट किया जापान. This it is which has given her to the rest of Asia. We have seen that the life and the strength are there in us. Only the dead crust had to be removed. We have seen that taking shelter in death is death itself, and only taking on the risk of life to the fullest extent is living. तो क्या बोल रहे हैं, ये जापान का जो ग्रोथ हुआ है वो सारे एशिया को एक बिलीव दिया है कि वो भी ग्रो कर सकते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं. सिर्फ जो एक डेड क्रस्ट है उसको तोड़ के निकालना पड़ेगा, अपने आप को उसको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम लोग अपने आप को डेड क्रस्ट से या डेड से घिरा हुआ रखेंगे या डेड
चीज़ों से, डेड पीपल हो, डेड कल्चर हो, डेड जो अचीवमेंट्स हो, उससे हम लोग अपने आप को अगर बोस्ट करते रहेंगे तो हम लोग का मृत्यु ऑलरेडी हो चुका है, ये समझा जा सकता है। तो इधर क्या बोल रहे हैं? We have seen that taking shelter in the dead is death itself, and only taking all the risk of life to the fullest extent is living. मतलब लाइफ को अगर हम लोग फुलेस्ट एक्सटेंट पे जीना है तो हम लोग को पूरा सारे रिस्क लेना से चाहिए, सारे एडवेंचर्स को हम लोग को टेक ओवर करना चाहिए टू लिव लाइफ इन द अटमोस्ट थ्रिल. I, for myself, cannot believe that Japan has become what she is, imitating the West. I, for myself, cannot believe that Japan has become what she is by imitating the West. We cannot imitate life. We cannot stimulate strength for long. Nay, what is more, a mere imitation is a source of weakness. For it hampers our true nature. It is always in our way. It is like dressing our skeleton with another man's skin, giving rise to external fuse between the skin and the bones at every moment. क्या बोल रहे हैं? I, for myself, cannot believe that Japan has become what she is by imitating the West. Rabindranath is saying that Japan did not become what Japan is by imitating the West. It's not an imitation of the Western culture. It's Japan's own culture that had made Japan the Japan that it was. We cannot imitate life. We cannot imitate the strength for long. Nay, what is more, a mere imitation is a source of weakness. अगर हम लोग imitate कर रहे हैं, वो एक source of weakness बन सकती है. उसको हम लोग ज़्यादा देर तक पकड़े हुए नहीं रह सकते. हम लोग life को imitate नहीं कर सकते किसी और का life से. For it hampers our true nature. It always in our way. हम लोग का ट्रू जो ग्रोथ का जो स्पिरिट है उसके वे में आ जाएगा अगर हम लोग किसी और को इमिटेट करें, क्योंकि किसी और का जो प्रस्फुटित होने का वे है, प्रोसीजियर्स है, वो हम लोग से डिफरेंट हो सकते हैं. वो लोग का कंडीशंस डिफरेंट हो सकता है, वो लोग का रिसोर्सेज डिफरेंट हो सकता है, वो लोग का लाइबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती है. इसीलिए किसी और को अगर इमिटेट करने की कोशिश करेंगे वो हमारे रास्ते में एक ऑब्स्ट्रकल बनेगा एंड हम लोग को हेल्प शायद नहीं करेगा. It is like dressing our skeleton with another man's skin. It's like हम लोग अपने आप का skeleton लेते हैं एंड किसी और इंसान का स्किन से उसको ड्रेसअप करते हैं. Giving rise to giving rise to eternal fuse between the skin and the bone at every moment, which हम लोग का skin and bone में, मतलब दूसरा का skin जो हम imitate कर रहे हैं एंड अपना bone में एक कन्फ्लिक्ट चलते रहेगा. बिकॉज ये लाइफ शायद मेरे लिए है ही नहीं, ये ग्रोथ शायद मेरे लिए है ही नहीं. वो हम लोग अगर इमिटेट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग का लाइफ पे बांधा व्हाट यू कॉल इट ऑब्स्टेकल्स आएंगी. आई वाज गोना से बाधा विपत्ति बट लाइक आई सेड समथिंग. या फक. The real truth is that the science is not man's nature. It is mere knowledge and training. The real truth is that science is not man's nature. It is mere knowledge and training. By knowing the laws of the material universe, you do not change your deeper humanity. You can borrow knowledge from others but cannot borrow temperament. But at this imitative stage of our schooling, we cannot distinguish between the essential and the non-essential, between what is transferable and what is not. It is something like the fate of primitive mind in magical properties of accident of outward form which accompany some real truth. क्या बोल रहे इधर? But the real truth is that science is not man's nature. It is mere knowledge and training. साइंस एक इंसान का नेचर नहीं है. साइंस इंसान का लाइक प्रवृत्ति नहीं है. इट्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग के वजह से साइंस हम लोग को मिला है. बाई नोइंग द लॉज ऑफ मटेरियल यूनिवर्स यू डू नॉट चेंज द डीपर ह्यूमैनिटी. अगर आपको मॉडर्निटी का काफ़ी सारे अचीवमेंट्स मिल भी रहे तो आप अपने आप का टेम्परमेंट को इमिटेट करके चेंज नहीं कर सकते हो. आपको
खुद से चेंज करना पड़ेगा. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. आई एम नॉट श्योर दो. You can borrow knowledge from others but cannot borrow the temperament. Again वही बोल रहे हैं, आप दूसरे से नॉलेज को बोरो कर सकते हो बट टेम्परमेंट को आपको बोरो नहीं, अपने आप से उसको लाना पड़ेगा. बट एट द imitative stage of our schooling, we cannot distinguish between essential and the non-essential, between what is transferable and what is not. It is something like the faith of primitive mind in magical properties of accidents outward form which accompany some real truth. We are afraid of leaving out something valuable and efficacious by not swallowing the husk with the kernel. I have no fucking clue what is being said here, okay? बहुत ज़्यादा. I thought I'll complete this. Holy shit. I'm in page 11 right now by the way and ये page 46 तक है. मैं आज के लिए चलता हूँ. बाय बाय फॉर टुडे. या हम सोचे थे कि इस स्ट्रीम पे थोड़ा ख़त्म करने का कोशिश करेंगे बट मैं आज चलता हूँ. बाय फॉर टुडे. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. हम ये स्ट्रीम करेंगे, ओके. I'll complete, I'll rather like continue from here.